को रखेंगे 205। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग सीखेंगे अपने फ़ोटो में बैकग्राउंड चेंज एंड करेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले पिक्सार्ट ओपन कर लेंगे। अपनी फोटो के बैकग्राउंड को ओपन कर लेंगे। मेरा बैकग्राउंड गैलरी में पड़ा है। शॉर्ट्स हमारा बैकग्राउंड ऐड आ रहे हैं, कैंसिल कर देंगे ऐड को। ये रहा हमारा बैकग्राउंड, जहाँ से अपनी फ़ोटो को ऐड करेंगे। आप सबने देखा होगा कि मैंने पिछली वीडियो में का बैकग्राउंड रिमूव करा था। इसको ऐसे सेट कर देंगे, ऐसे इसको डन कर देंगे। इसको शेयर वाले ऑप्शन से शेयर करके लाइटरूम में ऐड कर लेंगे। उसको वहीं से करेक्शन करेंगे, बैक आ जाएंगे, डिस्कार्ड करेंगे। लाइटरूम में ओपन कर लेंगे फोटो को अपनी। ये लाइटरूम, यहाँ से ये हमारी फोटो। लाइट को ऑटो में कर देंगे। टेम्परेचर को रखेंगे -8, टेंट को -16, टेंट को रखेंगे -16, वाइब्रेंस +77, सैचुरेशन को रखेंगे 0। इसके मिक्स टूल में आ जाएंगे, यहाँ से रेड वाले का ह्यू रखेंगे। रेड का ह्यू +38, सैचुरेशन +22 हो गया। लुमिनेंस +14, ऑरेंज वाले का ह्यू -22, -22 नहीं 12 रखते हैं, 12 सही रहेगा। नहीं सही लग रहा, ज़्यादा हो जाएगा। सैचुरेशन में -20, लुमिनेंस +19, येलो वाले का ह्यू +38, नहीं 38, सैचुरेशन -47, सैचुरेशन -47 हो गया। लुमिनेंस को नहीं छूलेंगे। ग्रीन वाले का ह्यू सैचुरेशन यूज करेंगे -58, ह्यू और लुमिनेंस को नहीं छूलेंगे। सही है। स्काई ब्लू ह्यू +28, -29, सैचुरेशन -79, सैचुरेशन -74 रखेंगे। ब्लू का
ह्यू -27, saturation -34, तो इल्यूमिनेशन चलेंगे। पर्पल का पिंक का सैचुरेशन -100 कर देंगे। पिंक वाले का भी -100, इसको डन कर देंगे। इसका क्लैरिटी +16, ये इसको 0 रखेंगे। विग्नेट -16, यहाँ से स्प्लिट टोन में आ जाएंगे। इसको रखेंगे 205, ह्यू 205, सैचुरेशन 55। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। थोड़ा ये सैचुरेशन इसका 222, ह्यू 222, सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 5-6 रख देता हूँ। इसको डन किया। लेयर्स में बेसिक मॉडर्न 2 सेलेक्ट किया, ऐसे डन कर दिया। इसको सेव टू डिवाइस, हाईएस्ट क्वालिटी, ओके।